गुड आफ्टरनून एवरीवन। फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक दिन जो सीए बन जाएंगे। एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। Hopefully you all of you have get revised what we have discussed in the last class. So this is the time to revise once again, and then we will have the small test. So what is the meaning of performance? Performance means carrying out the obligations. It means to fulfill the obligation which are decided in the contract. What are the types of performance? Actual performance, when parties actually perform what they have decided at the time of making the contract. Tender perform means offer to perform or attempted perform. Condition for a valid performance, it must be unconditional, proper time and place. Promisee should have the reasonable opportunity to examine the goods. It should be for whole obligations, and it may be to promisee or his duly authorized agent. However, a tender may be made to any of the joint promisee in case of joint. Tender must be of the exact amount and must be in the legal tender. Legal tender means legal currency. And tender must be of the exact amount. This is in concern of the foreign currency transactions. Right? Who may perform? Promiser himself, agent where personal skills are not required, legal representative in case of death of promiser, but where the personal skills are required, then contract will be ended. Third person, if promisee accept the performance by third person, then promiser will not be liable, right? Performance of joint promise, I have told you, rights are always joint and liabilities are joint and several. All the promisers are liable jointly and severally. However, contract may provide otherwise. One has right of contribution from others, and if one of the joint promiser is released, he is responsible to the other joint promiser or promiser. Time as during business hours at business place or the residence of promise. Performance of reciprocal promise. First is mutual and dependent. If the promiser who must perform fails to perform, he cannot claim the performance of the reciprocal promise. अगर दो promise एक दूसरे को dependent है, तो अगर पहला promise complete नहीं होता है, यानी पहले promise का performance नहीं होता है, तो second वाले के ऊपर कोई liability नहीं. Mutual and independent, both are independent. They must be performed independently. Each party must perform his promise without waiting for the performance of the readiness to perform on the part of other. It may be mutual and concurrent. The promises have to be performed simultaneously. In case of reciprocal, if one part is illegal and what is other part is legal, then illegal part is void, right? Appropriation, adjustment of payment against the debt. Remember the example. Appropriation by debtor, अगर debtor ने कुछ कह के भेजा है तो and the creditor accepted, then he must adjust or apply according to the way given by the debtor. If a debtor has mentioned nothing, then creditor may adjust against the any debt including time bar debt but not the disputed debt. ठीक है, where both parties are silent for the application of the debt, then in the FIFO method, first in first out, including the time bar, but again not for disputed. ठीक है, तो प्लीज प्रिपेयर द शीट. बहुत दिन हो गए आप लोगों के नाम नहीं लिए, चलो आज नाम लेता हूं मैं. गुड आफ्टरनून मिस्टर ओम गुप्ता, रिचा कुमारी, मनीष सिंह, कोमलप्रीत कौर. गुड आफ्टरनून प्रकृति, जिग्नेश पाठक, साई एम. गुड आफ्टरनून पंकज सिंह, पवित्रा, कीर्ति, सलोनी, अपूर्वा, सूरज, जिया, पूजा, अंतिमा, आवेश. गुड आफ्टरनून एवरीवन. रितु, एमडी, चंचल, कोमल, शिल्पा, रूहानी. गुड आफ्टरनून बच्चों. सुनील, विवेकानंद, रुचिता. गुड आफ्टरनून एवरीवन. एक क्वेरी है आपकी. When personal skills are involved, when the promissory dies, the contract comes to end. देखिए, अगर
किसी को परफॉर्म करना है, पर्सनली स्किल्स की चाहिए, वो डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, राइट। गुड आफ्टरनून वेंकट लक्ष्मी, विदिशा दे, विवेकानंद, गुड आफ्टरनून बेटे। Someone is asking, sir, if B and C lend money to A and before A give money, B dies and there is no representative for B, then C can ask for the money from A or not. C can ask only his share, right? Uh, Good afternoon, Mujammil. Komal is saying, sir, we can write the answer in the way we have been the PPT. Answer is, my answer is yes. Oh, good afternoon, Janvi, Sneha, Sia, Harshit, Mohammad Shoaib. Good afternoon, Shweta, Khushi, Pratima, Gopi Krishna, Yashas, Aditi. Good afternoon. जब तक आप लोग ये प्रिपेयर कीजिए शीट। प्रणीति, राजकुमार, रेनू, गुड आफ्टरनून बेटे। रितु, प्रवीण, विकास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सुलक्षणा, विदुषी, गुड आफ्टरनून। तनीषा, फिजा, दिया, पायल बेन पाठक, गुड आफ्टरनून। कशिश बजाज, गुड आफ्टरनून। Suchiang, good afternoon. Someone is saying, sir, please explain third point of appropriation. बेटा अगर डेटर ने भी कुछ नहीं मेंशन किया है और क्रेडिटर ने भी कुछ मेंशन नहीं किया है तो जो सीक्वेंस था लायबिलिटी का उसी सीक्वेंस में वो एडजस्ट होगा इंक्लूडिंग टाइम बार्ड, राइट। सो money paid to government servant for getting contract for canteen is illegal, definitely yes. Good afternoon, Agni Prakash. यशवंत जैन, जय जिनेन्द्र, गुड आफ्टरनून। अब तो सभी लोगों के नाम हो गए, फिर रह गया प्रयुक्ता, गुड आफ्टरनून। मकसूद, गुड आफ्टरनून बच्चे। भूमिका, चलिए तो सबसे गुड आफ्टरनून हो गई। अब स्टार्ट करें बच्चों, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट means the performance of respective obligation under the contract by promisor only, promisee only, both the promisor and promisee, court of law. थैंक यू सुनील, थैंक यू भूमिका, थैंक यू परिणीति। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू, प्लीज नोट डाउन द आंसर। बच्चों आपको आंसर नहीं भेजने, बार बार बोल रहा हूं बेटे, आप सिर्फ अपने पास चेक करो, ठीक है। द राइट आंसर इज सी, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोथ प्रोमिसर एंड प्रोमिसी हैव टू परफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, a contract involving personal skill of the promisor can be performed by promisor alone, agent of the promisor, promisor's legal representative, all of these involving personal skills. The answer is it should be by promisor alone. Next point, where two or more persons jointly enter into an agreement with one or more person. Where two or more persons jointly enter into the agreement with one or more person, the promise is known as joint promise, combined promise, reciprocal promise, none of these.
Someone is asking, sir, what is the weightage of this chapter? बेटा मैं फर्स्ट डे सब पूरी शीट दे चुका हूँ कि इसमें से कितना आया है, क्या रहा है, प्लीज एक बार से चेक करिए, ठीक है ना? This is called joint promise. Where each party is a promiser as well as promisee. It is a case of every valid contract, reciprocal promise, general offer, contingent contract. You have to select the best one, बच्चों. The answer is reciprocal promises. Next, where payment by debtor is made without any express indication of appropriation. Where payment by a debtor is made without any express indication of appropriation, to which of the following debts payment can be appropriated by the creditor? Any legal debt, time bar debt, any debt legal or illegal, both A and B. The answer is D, any legal debt including time bar debt. The promise which are to be performed simultaneously are known as mutual and concurrent, conditional and independent, mutual and independent, none of these. The answer is A. It is called mutual and concurrent. A owes rupees 50,000 to B before clearing his liability. A dies leaving behind an estate worth rupees 40,000. In this case, A's legal representative are liable for 10,000, 40,000, 50,000, none of these. आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने अभी एक क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, पर अभी ये डिस्कस नहीं किया है, पर इसको आप एक बार अपने दिमाग से लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे अभी क्लास में आज. सर टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, सो शुड आई वॉच प्रीवियस क्लासेस? बेटा आप प्लीज एक बार जिसकी फर्स्ट क्लास है आज, सारी क्लासेस एक बार रिकॉर्डिंग चेक देख लीजिए संडे तक, ठीक है ना? तभी आपको एक बार यूज टू हो पाएंगे आप. Promisee means to whom I make the promise, right? The answer is B. कह रहा है 50,000 की लाइबिलिटी थी, एक की डेथ हो जाती है, अब एक की जो असेट बची, जो लीगल हेयर को गई, वो 40,000 की थी. तो एक की लीगल हेयर की लाइबिलिटी कितनी होगी? 40,000 की, 50,000 की या 10,000? तो इसका आंसर है, द आंसर इज दैट द लीगल हेयर इज लाइबल ओनली अप टू दैट अमाउंट विच ही हैज इनहेरिटेड. जितना उसे विरासत में मिला है वहीं तक लाइबिलिटी होगी. अगर लाइबिलिटी ज्यादा भी है तो उसको केवल उतना ही चुकाना है जितना उसको मिला है, इसके अलावा उसको लाइबिलिटी नहीं होगी, राइट? नेक्स्ट, Rohan and Sohan jointly promised to pay Mohan 30,000. Sohan paid the whole amount to Mohan. If Rohan is solvent, solvent means he can pay the liability. Sohan can recover 30,000 from Rohan, 15,000 from Rohan, 10,000 from Rohan, none of these. The answer 15,000. दोनों का equal share. Rahul and Deepak are joint promisor. Promisee discharge Deepak.
डिस्चार्ज, दीपक को डिस्चार्ज कर दिया, देन बोथ ऑफ देम डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी. Promise comes to end. Deepak is now discharged from liability towards Rahul. Rahul is discharged from liability. The answer is Deepak is now discharged from liability towards Rahul. Rakhi is dancer. She contracts with Raghav to dance in a program, but before due date of performance, Rakhi dies. This contract is performed by Rakhi's legal heir, Rakhi's relative, by Raghav himself, none of the above. As this contract requires personal skill, the contract comes to end, so no one will be required to perform. ठीक है. Pankaj is saying, sir, in 8th question, no mention of equality of share. If question is silent about the contribution, then both are liable for both or all of them are liable to share equally, right? चलिए, ये तो हो गया आप लोगों के क्वेश्चंस. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अब कितने 10 on 10 हैं देख लें. चलिए, सबसे पहले जवाब आया है दरविश का. He got 10 on 10. Good. Congratulations, Pratima. Congratulations. I think all of you should be congratulated for getting 10 on 10. So let's start the topic. जहां से हमने लास्ट में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों. Today's first topic is succession and assignment. Succession and assignment. Succession. When the benefit of contract are succeeded by process of law. Process of law, then burden and benefit attaching to the contract may sometimes devolve on the legal heir. Devolve, you can say that transfer. Normally succession hota hai in case of death. Normally succession is in case of death. So law says in case of succession in case of death, all the liabilities and rights, all the liabilities and assets are transferred to the legal heir. Example number A. Example, if son succeeds to the estate of his father after his death, he will be liable to pay the debts and liability of his father owed during his lifetime. But if the debts owed by father exceeds the value of the estate inherited by the son, then he would not be called upon to pay the. In other words, the liability of the son will be limited to the extent of property inherited by him. Thus far and no further. मतलब क्या होगा बच्चों कि एक बेटे को उसके पिता से जो संपत्ति मिली तो उनकी पिता की लायबिलिटी चुकाने के लिए भी वो लायबिल होगा, राइट. जो भी उसकी पेमेंट से जो लोन थे वो सब चुकाने. लेकिन अगर उन लायबिलिटीज की वैल्यू जो असेट्स उसे मिली उससे ज्यादा हो जाती है तो वो एक्सेस चुकाने के लिए लायबिल नहीं होगा, यानी वो अपनी पर्सनल असेट्स को यूज करने के लिए लायबिल नहीं है. क्लियर इतनी बात? क्लियर हो गई सक्सेशन. नाउ द असाइनमेंट. Assignment is assigning or transferring the rights only. In the matter of assignment, however, the benefits of a contract can only be assigned, not the liability. सक्सेशन कब होता है? नॉर्मल डेथ केस में, बट असाइनमेंट जिंदा होने के केस में भी हो सकता है.
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज किसी से आपको रिकवर करनी है, आपने अपना जो राइट है वो किसी को असाइन कर दिया कि भाई मेरी जगह पर ये रिकवर कर ले, बट लाइबिलिटीज कैन नॉट बी असाइन, लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती बिकॉज व्हेन द लाइबिलिटी इज असाइंड अ थर्ड पार्टी गेट इन्वॉल्व। अगर आप लाइबिलिटी असाइन कर रहे हो यानी कि मेरी जगह पर कोई और चुकाएगा तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई। तो जो प्रोमिसी है वेदर ही इज रेडी और नॉट टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस बाय दैट थर्ड पार्टी, thus a debtor cannot relieve himself or his liability to creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt. But on the other hand, if the creditor assigns a benefit, he thereby entitles the assignee to release the debt from the debtor, but where the benefit is coupled with personal liability, liability or a personal consideration like personal skills has entered into the making of contract, then the benefit cannot be. For example, I have contracted to teach Mr. X for CA Foundation Law. So the right of Mr. X is just getting the teaching from my side. This involves again the personal skill. He cannot, Mr. X cannot assign his right to Mr. Y. कि साहब मेरी जगह Y को पढ़ा दीजिए। मान लीजिए Y की कैपेबिलिटी नहीं है, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था किसको पढ़ाने के लिए, X को पढ़ाने के लिए। अब वो कह रहा है, X कह रहा है कि आप मेरी जगह पर Y को पढ़ा दीजिए। Y की कैपेबिलिटीज है ही नहीं समझने की, बहुत छोटा बच्चा है या वॉट एवर भी। सो जहां पर्सनल स्किल चाहिए वो राइट पे असाइन नहीं हो सकते। क्लियर? एक क्वेश्चन आया है, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, एक क्वेरी है आपकी साइड से। A is in need of 1 lakh but was unable to get any loan from the bank as he had no security to offer. A approached his friend B, who knowingly the helpless position of A lent money to at A lent money to A at very high rate of interest, saying that he had himself borrowed money from C. The contract is weighted by undue influence that B had exercised over A due to his close relationship, void as the rate of interest being very high, not valid as B wrongly missed. बेटा ये तो सिंपल सा केस ऑफ undue influence का है, don't worry. So now come to the impossibility of performance. Impossibility existing at the time of contract. देखिए एक बात तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, if the performance is impossible, performance is impossible whether at the time of contract or impossibility arise after the making of contract, in both situations contract is void. कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस अगर इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबिलिटी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय थी या बाद में क्रिएट हो गई किसी रीजन से, अभी डिस्कस करेंगे, दोनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। भाई जब परफॉर्मेंस करना पॉसिबल ही नहीं है, बेचारा करेगा कैसे? क्लियर इतनी बात? तो फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। When the parties agree upon doing of something which is obviously impossible in itself, the agreement would be void. The fact of impossibility may be or may not be known to the party. एक बार रीड करिए बच्चों।
कह रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, चाहे ये इम्पॉसिबिलिटी पार्टीज को मालूम हो या ना। ठीक है, अब अगर आते हैं, इफ नोन टू द पार्टीज इट वुड बी ऑब्जर्व that agreement constituted quite unknown to the parties may be impossible of being performed and hence void. B promises to pay a sum of, एक मिनट प्लीज, इसमें मुझे लग रहा है एक क्लरिकल मिस्टेक है बच्चों, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड बच्चों। इसमें बेटे ये करेक्शन होगा प्लीज, क्लरिकल एरर है ये हट जाएगा, अनहट जाएगा। ठीक है, it would be observed that the agreement constituted quite known to the parties may be impossible of being performed and hence void. B promises to pay a sum of rupees 5,000 if he is able to swim across the Indian Ocean from Bombay to Aden within a week. It is quite impossible. In this case, there is no real agreement since both the parties are quite certain in their mind that this act is impossible. Therefore, agreement is void. अगर आपको पता है void होगा, नहीं पता है तो भी void होगा, because जब possible ही नहीं है तो perform कैसे? If unknown to the parties, where both the promiser and promisee are ignorant of impossibility of performance, contract is again void. A contracted B to sell his brown horse for rupees 50,000, both unaware that the horse was dead at the time a day before the agreement. So agreement is void. अब क्वेश्चन आता है, if known to promiser only, एक आदमी को पता, दूसरे को नहीं, ये impossible है. Where at the time of entering into contract, the promiser alone knows about the impossibility of performance, or even if he does not know, though he should have known, it will be reasonable diligence. The promise is entitled to claim compensation for any loss he suffered on account of non. प्रोमिसर को पता था कि ये इम्पॉसिबल है और प्रोमिसी को नहीं पता। इस केस में प्रोमिसी प्रोमिसर से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। इफ ओनली द प्रोमिसर नोज दैट द परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल बट नो आइडिया of impossibility to the promisee, then promisee can claim compensation from the promiser for non-performance. चलिए इतनी बात। Right? Supervening impossibility. Supervening impossibility means subsequent impossibility. Subsequent means impossibility arise after the entering into the contract. यानी कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त परफॉर्मेंस पॉसिबल था, लेकिन बाद में कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है। इट इज कॉल्ड सुपरवेनिंग इम्पॉसिबल। सपोज मैंने एक किसी को घर किराए पे देने का प्रॉमिस किया, घर बना हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मुझे घर 1 महीने बाद किराए पे देना है, लेकिन 15 दिन बाद ही घर गिर गया। तो जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक्त वो पॉसिबल था, बट 15 दिन बाद वो इम्पॉसिबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। Suppose I entered into a contract with Mr. X to give my house on rent after 1 month. So at the time of making the agreement, the contract is perfectly valid because the performance can be done. But after 15 days, the house was destroyed by some natural calamities. Then it is called supervening impossibility. It is subsequent impossible, right? Again, in this case, contract will be void. सुपरवेनिंग होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता। When performance of the promise becomes impossible or illegal by concurrence of an expected event or a change of circumstances beyond the contemplation of parties, the contract becomes void.
एग्जाम्पल चेंज इन लॉ, कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय प्रॉपर लॉ था, बाद में कुछ दिन बाद लॉ ही चेंज हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो void हो जाएगा. A and B contracted to marry each other before the time fixed for the marriage A became made. In this case, the contract become void due to subsequent impossibility and thus has been discharged. ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया शादी का, लेकिन शादी की डेट से पहले ही, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट करना था उस समय पहले ही वो ए पागल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, void. Right? Contracts which need not to be performed, this will be discussed later at the last of the topic for today's topic. ठीक है, ये हम आज लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बट आई एम टेकिंग क्वेरीज. बेटे एक क्वेरी थी कोमल प्रीत की, शी इज सेइंग सर आंसर इसमें डी लिखा हुआ है, द ऑप्शन डी दैट valid as if friend could not be supposed to have weighed under influence only because the money lend carry higher rate of interest. देखिए, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वैलिड हो सकता था अगर सिचुएशन में या उस एरिया में वही रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही. एंड अकॉर्डिंग टू माय व्यू दिस शुड बी ए, वेटेड बाय अंडर इन्फ्लुएंस. ठीक है, someone is asking sir can I ask question from past classes. बेटा मैं तो बता दूंगा, लेकिन बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं आज की क्लास वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर वो आपको कुछ बदुआ ना दे दें, बस इतना इसका डर है मुझे. डिलीजेंस मींस इंटेलिजेंस, यू कैन से. एक क्वेश्चन है, फादर हैज डाइड एंड फादर हैड द लायबिलिटी ऑफ 2 लाख रुपीस. फादर डाइड ऑन जून एंड सन गॉट ऑल द प्रॉपर्टी worth 3 lakh on his name by July as a legal heir, and son sold all the property by August. In September, one person came and he had your father took loan rupees 2 lakhs. Sir, what will happen in this case? ना कहना यह है कि फादर की डेथ हो गई, पिता की लायबिलिटी 2 लाख रुपए की थी, इनको असेट मिली 3 लाख रुपए की, उन्होंने असेट बेच दी. उसके बाद उस 3 लाख की असेट बेच के 2 लाख का लोन अब चुका दिया. जब लोन पे ऑफ हो गया, उसके बाद एक आदमी और आया कि साहब मेरे पास देखो 2 लाख का लोन मुझसे लिया था, मेरे पास लीगल एविडेंस है. तो इस केस में केवल 1 लाख की लायबिलिटी आती है, क्योंकि उनके पास 1 लाख ही बचा है उस प्रॉपर्टी में से जो उनको पिता से मिली. राइट सर, अगर प्रॉमिसर को पता था और प्रॉमिसी को नहीं, तो फ्रॉड का केस होगा कि नहीं? फ्रॉड का केस भी होगा, लेकिन कॉम्पनसेशन किसके लिए भी मिलेगा कि आपने परफॉर्म नहीं किया. राइट मिस्टर आवेश, चेक कीजिए आपके कोई टेक्निकल एरर है, बार बार आपका नाम प्रिंट होके आ रहा है मेरे पास. Contractual relationship means relationship created by contract, right? Termination mean बेटा एंड, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं. चलिए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. टर्मिनेशन मींस एंड होना. जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने डिसाइड किया था कि मैं आपके लिए काम करूंगा या आप मेरे लिए काम करेंगे, उसका एंड होना कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि हमारी लायबिलिटी अब कोई बची नहीं करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इन अदर वर्ड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज व्हेन आइदर ऑफ द पार्टी इन नो मोर लायबल टू द कॉन्ट्रैक्ट. जब लायबिलिटी नहीं बचेगी तो हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ कम टू द मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब ये समरी शीट है, दिस समरी शीट.
right? What are the modes what are the ways in which contract can be discharged? Normally, this sheet is sufficient for whole concept. You may add some points for your memory in this sheet. First, I will discuss these terms and then we will discuss in detail the mode of discharge of contract, right? मनीष प्लीज सर मैं क्वेश्चन पूछना है लास्ट क्लास का एंड में पूछ लूं प्लीज आप एंड में मुझसे ठीक है एक अच्छा क्वेश्चन है Saloni is asking, sir, a mother died in June and passed on her property in July worth rupees 19 lakh to her son. But there was a time bar debt which got due in mid-June. What will be happen in this case? उनका क्वेश्चन ये है कि सर मदर की डेथ हो गई और 19 लाख की प्रॉपर्टी बेटे को मिली. अब मदर की जो लायबिलिटी थी उसमें एक टाइम बार डेब्ट और राइट यही क्वेश्चन था आपका. अब उसका क्या होगा? देखिए बेटा वही लायबिलिटी चुकाने के लिए लायबल है जो मां को चुकाना. Whether mother is liable to pay the time bar debt, answer is no. That's why son will not be. Clear इतनी बात? सर अगर फादर ने प्रॉपर्टी डोनेट कर दी थी डेथ से पहले और उसके ऊपर 2 लाख का डेब्ट था तो क्या सन लायबल होगा? नो, आंसर इज नो. मैं बोला लीगल हेयर केवल वही लोन चुकाने के वही लोन चुकाने के लिए लायबल है जितना उसको प्रॉपर्टी मिला है. अगर उससे ज्यादा लोन है तो वो नहीं चुकाए. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में प्रूफ ऑफ बर्डन किस पर होगा? जो ये कहेगा कि सब इम्पॉसिबल है, राइट? Sir, please explain in English also. I am also explaining better, but I please I really want to know which topic you want to be explained. Restraint, restraint, restraint मतलब जैसे कहते हैं ना restricted, you can say the restricted in restraint in trade, जो trade को restrict कर रहा हो, रोक रहा हो, right? So these are the ways in which contract can be discharged. So first is by performance. You have made the performance, your liabilities comes to end. And we have discussed the performance are of two types. Two types, actual performance, section 37 we have discussed, and tender performance, section 38. कि आपने actually perform कर दिया, then you are not liable to perform anything else. You have made the offer to perform and the promise is not ready to get performed. So you are not liable for the performance, यानी कि you are discharged from the liability, right? Second is by mutual consent और एग्रीमेंट, आपस में तय करके डिसाइड किया. तो प्लीज नोट डाउन, स्पेसिफिकली जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो नोट कर लें. नोवेशन मींस न्यू कॉन्ट्रैक्ट. नोवेशन मींस न्यू कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन, देन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज. यानी कि कोई भी पार्टी पुराना कॉन्ट्रैक्ट पर परफॉर्म करने लायबल नहीं है अगर नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाए. रेसिशन मींस एंड, कैंसिल हो गया, एंड हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन. यू कैन से कैंसिलेशन. ऑल्टरेशन, चेंज ऑफ सम टर्म्स between same parties. Parties should not be changed in case of alteration. In case of novation, parties may be changed, but in case of alteration, parties are not changed. They are the same parties as the originally in the contract. Remission, discount. नोट करते जाइए बच्चों. Waiver, 100% discount, fully waived.
merger, inferior right merged in superior right, inferior right merge in superior right by impossibility of performance. परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। कैसे परफॉर्म होगा? destruction of subject matter on which topic, on which subject matter contract was entered, and that is discharge. I have taken the example of rent, flat on rent. मैंने फ्लैट को रेंट पे दिया पर वो फ्लैट ही खराब गिर गया, खराब हो, डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। डेथ और डिसेबलमेंट फॉर पर्सनल सर्विस, अगर पर्सनल सर्विस चाहिए जिसको देनी है उसकी डेथ हो जाती है, then contract is discharged, no one is liable to perform. Subsequent illegality, at the time of making the contract was legal, but after that law was changed and performance become illegal, then contract comes to end, discharge of contract. Declaration of war, war declare हो जाए contract होने के बाद. Non-existence of state of things, in the important things which are main things for the contract are not in existence at the time of performance, the contract is discharged. Breach of contract, contract को तोड़ना, breach of contract means contract को तोड़ना, perform करने से मना कर देना. Anticipatory, actual, लिखिए anticipatory में before the due date of performance. Suppose ड्यू डेट परफॉर्मेंस की 12 तारीख है, आप 12 तारीख से पहले ही मना कर देते हैं. सपोज द डेट ऑफ परफॉर्मेंस इज 12 but you deny to perform before 12, it is called anticipatory breach of contract. An actual breach, when you deny to perform on the time of, on the due date or on the due time for perform. जिसमें परफॉर्म करना था उसने आप परफॉर्म नहीं किया, आप मना कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा वो, एक्चुअल ब्रीच. लैप्स ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स टाइम बार्ड. अगर टाइम बार्ड हो गया, 3 साल हो गए, तो परफॉर्म करने की कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज. चलिए जब तक इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन एक करके. आपकी क्वेरी क्या है बच्चे? Personal property of son can be used to pay the liability of father. I already told you, beta, personal property of any legal heir is not liable to pay of the liabilities of the deceased person. Sir, what is the meaning? Sir, if the son are alive, could daughter claim the property of parents? This is the personal law as per the Hindu law or Muslim law. You must refer. But in my view, she can definitely claim the share. What is the meaning of remission? I have discussed remission discount. Sir, please explain alteration again. मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, पूरा अभी एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, थोड़ा वेट करो. मर्जर बता, अभी मैं डिस्कस करूंगा बेटा एक एक पॉइंट. व्हाट इज मर्जर क्या है, डेसेशन क्या है, रेमिशन क्या है. वेट, थोड़ा सा वेट तो करो बेटा, 5-7 मिनट तो वेट करो, अभी डिस्कस करता हूँ. अच्छा, आज है ना आप लोगों का एक ही सुपर वो है, क्या कहते हैं उसको, जो आपकी क्वेश्चन की सीरीज है, पेनल्टी शूट आउट एक ही है. तो वी विल हैव द ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद एक ब्रेक रखेंगे 10 मिनट का, फिर इसको कंटिन्यू करें. ठीक है? सो फर्स्ट इज मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मोड इज बाय परफॉर्मेंस. We have discussed already in this chapter only where the parties have done whatever was contemplated under the contract, actual performance or tender. यानी कि जो डिसाइड किया था परफॉर्म करने के लिए, अगर वो हमने परफॉर्म कर दिया तो लायबिलिटी क्या हो गई, हमारी खत्म हो गई. क्लियर इतनी बात? बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट. तो प्लीज यू रीड फर्स्ट, देन आई विल explain.
नोवेशन, मैंने बोला था नोवेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओरिजिनल वन। आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम? नोवेशन। Substitution of a new contract for original one. The new contract may be substituted between the same parties or between different parties. But novation should take place before the expiry of the time of performance of original contract. लेकिन जो नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कब होना चाहिए बच्चों? एक्सपायरी डेट से, ड्यू डेट से पहले। बिकॉज अगर ड्यू डेट पर परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो केस क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस हो जाएगा। नोवेशन का मतलब क्या है? जो ड्यू डेट है, यानी कि जिस टाइम पर आपको परफॉर्म करना था उससे खत्म होने से पहले ही आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर, यानी कि पार्टी शुड बी एंटर्ड इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। सी द एग्जाम्पल। X borrowed ₹1,000 from Y. X, Y and Z agreed that debt will be discharged by Z. Now a new contract between X and Z is formed and the old contract between X and Y comes to end. X ने 1,000 रुपए बोरो किए Y से, फिर तीनों X, Y, Z तीनों एक साथ बैठे और डिसाइड किए तीनों मिलकर कि X की जगह पर कौन पे करेगा? Z पेमेंट करेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट नया बना Y और Z के बीच में वो क्या हो गया? न्यू कॉन्ट्रैक्ट। और जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। यानी कि इस केस में अगर Y को 1,000 रुपए नहीं मिलते हैं तो कौन लायबिल होगा? Z will be liable. When the new contract was entered between Z and Y and Z, and in this case, if Y not get the money back of ₹1,000, then he can file only against the Z, not the against X. क्योंकि old contract अब खत्म हो गया, नया contract सीधा पर आगे बढ़ते हैं। Next point, rescission means cancellation of all or some of the terms of the contract by mutual understanding of the party. यानी कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो क्या बोलेंगे? रेसिशन। सपोज सी द एग्जांपल नंबर 28. A contracted with B for supply of 100 kg of rice. Later on, they agree that no rice need to be supplied. The contract is resigned by the mutual agreement. ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी को सप्लाई करेगा, 100 किलो राइस सप्लाई करेगा, लेकिन बाद में कहा सर मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बी ने कहा ओके मत कर। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया। ऑल्टरेशन मींस चेंज ऑफ सम टर्म्स बट सेम पार्टीज। If the parties mutually agree to change certain terms of the contract, it has the effect of terminating the original contract. This is, however, no change in the parties. A agrees to supply cotton of grade 1 to B before the delivery. A and B agree that in place of grade 1, cotton of grade 2 will be supplied. There is an alteration in the contract. A ने कहा सब मैं ग्रेड 1 की कॉटन सप्लाई करूंगा बी को, लेकिन आपस में तय किया भैया ग्रेड 1 नहीं ग्रेड 2 चाहिए, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑल्टरेशन। एक आप लोगों में कंफ्यूजन अराइज होता है, आप में क्या बहुत लोगों में अराइज होता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्टरेशन? Technically, we can say that novation can be in different parties, but alteration within same party. But in my views, agar change of some terms, then it should be alteration between the same parties. But if change of the major terms या कहें कि material part change हो रहा है, if the change is material part, then it should be a novation. ठीक है? Sir, in novation, can we extend the due date of performance? In novation, you can say, but I think अगर आप performance की date को, if you are extending the date of performance, it should be termed as alteration, right? Tender performance, beta, whether you will be in the last class or not, if you are there, I have already told you. If you are not there, please go to the recording of the lecture. ठीक है ना बेटे? Contemplated, contemplated जुड़ी हुई, इससे कह सकते हैं इसको। Resigned meaning I have discussed बेटा, cancellation डिस्कस तो किया बच्चे मैंने।
राइट। तो व्हाट वी हैव डिस्कस, नोवेशन परफॉर्मेंस हमने क्या डिस्कस किया, बाय परफॉर्मेंस एक्चुअल टेंडर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट मींस नोवेशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट मे बी विद इन द सेम पार्टीज और मे बी डिफरेंट पार्टीज। रेसेशन कैंसिलेशन, alteration means change of the sum terms, right? Next, remission, discount देना performance, acceptance of lesser sum than what was contracted for a lesser fulfillment of the promise made। यानी जितने से हमने परफॉर्म करना था उससे हमने कम एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए, भैया इतना नहीं कर पाओगे, इतना कर, दैट इज कॉल्ड रेमिशन। A has borrowed 1,000 rupees from B at interest of rupees 100. B agrees not to demand the amount of interest from A. This is remission। क्या कहा मैंने, A ने 1,000 रुपए बोरो किए B से, 100 रुपए का इंटरेस्ट था। B ने कहा भाई साहब मैं तो केवल 1,000 रुपए दूंगा। A ने कहा मैं तो 1,000 रुपए दूंगा। B ने कहा ठीक है, आप मुझे केवल प्रिंसिपल दे दो, इंटरेस्ट मत दो। इट इज कॉल्ड discount, it is called remission। But suppose in this same example, A said, I am not able to pay any amount to you, Mr. B. B said, okay, no need to give any money to me. This is called favor, 100% discount। A ने लोन लिया 1,000 रुपए का, B से 100 रुपए का ब्याज देना था। B ने कहा साहब, A ने कहा भाई साहब मैं ब्याज नहीं दे पाऊंगा। B ने कहा ओके मत दो, दिस कॉल्ड डिस्काउंट। A ने कहा साहब मैं तो 1 रुपया भी नहीं दे पाऊंगा, कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, लोन ले लिया मैंने, दे नहीं पाऊंगा, चुका नहीं पाऊंगा, इट्स कॉल्ड फेवर। Waiver means relinquishment or abandonment of right, where a party waives his right under the contract, the other party release or his obligations। Suppose in the above example, B agrees not to demand the whole amount of loan. This is called waiver। देखिए इंग्लिश में ना, इन इंग्लिश वन वर्ड इज कॉन्स्टिट्यूट इन अदर नंबर ऑफ वेज। तो आप कहाँ पर किस तरीके से पढ़ रहे हैं उसको लेके चलिए, ठीक है ना बच्चे। मर्जर, if inferior right merge with the superior right, right? So we will discuss this point after the break। At this place we will have the break of 10 minutes। 10 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं, रीज्वाइन करते हैं और इसको हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और आपकी क्वेरी भी लेते हैं।
Let's come to the topic what we have discussed. We are discussing the modes of discharge of contract. First, we have discussed the mode by performance, that is actual performance and tender performance. Second, we are discussing that is mutual by mutual consent or agreement. In this topic, we have first discussed the novation, means new contract in place of original. When new contract is entered, then original need not to be performed. The contract is original contract is discharged. Next part we have discussed rescission. Rescission means cancellation in this regard. Second, remission, discount. Next, waiver. It means 100% discount. Now we are in the merger. Merger means when inferior right merge with superior right. छोटा right बड़े right से merge हो जाए. Let's discuss an example. I have taken a loan. I have taken a property on rent from Mr. X. मैंने Mr. X से प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है. And the agreement was for 1 year. That next for 1 year I will pay the rent of 10,000 rupees per month. But after 3 months I have purchased that property. Whether I am even liable to pay the rent of 10,000. मैंने कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली 10,000 रुपये महीने पर, 1 साल का एग्रीमेंट किया, लेकिन मैंने 3 महीने बाद ही वो प्रॉपर्टी खरीद ली. तो क्या मैं लाइबल हूं उस रेंट को देने के लिए आज भी? द आंसर इज नो, बिकॉज मेरा जो इंफीरियर राइट था उस सुपीरियर राइट में मर्ज हो. ए होल्ड्स ए प्रॉपर्टी अंडर लीज. ही लेटर बाइज द प्रॉपर्टी. His rights as a lessee merge into right as a owner. जो उसका राइट था lessee वो merge हो गया as a owner. Now discharge of contract by impossibility. But before this I am taking your query. Sir, draw means void. What is the meaning of draw? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ draw का क्या कहना चाह रहे बच्चे. Please tell me what you want to ask. Okay, no query. By impossibility, we have already discussed the impossibility concept. When the impossibility, whether inherent or whether after the entering into the contract. Inherent means at the time of making the contract is void, discharge. Impossibility in a contract may either be inherent in the transaction or it may be introduced later by change of certain circumstances material to the contract. Inherent means known to the parties at the time of making the contract. A agrees with B to discover the treasure by magic. This is again a contract, void contract. Subsequent impossibility, a contract is deemed to have become impossible of performance and thus void under the following circumstances. Subsequent impossibility means impossibility arise after the entering into the contract. जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त कहीं भी इम्पॉसिबिलिटी नहीं थी, पर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ रीजन से वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया. फर्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट. सी द एग्जांपल. A music hall was agreed to be let out on certain dates, but before dates it was destroyed by fire. Hence the owner was absolved from liability to let the building as promised. एक म्यूजिक हॉल दिया गया कि सर्टेन डेट पर, लेकिन उस डेट से पहले ही म्यूजिक हॉल क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया बाय फायर. आग लग गई, उसमें खत्म हो गया. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा बिकॉज ऑफ impossibility, and this is impossibility is subsequent impossibility, and in law what is it is called? Supervening impossibility, right? By death or disablement of the parties, but where the performance needs personal skills. अगर पर्सनल स्किल चाहिए और जिसको करना है उसकी डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा. If personal skills are not required, then performance should be done by the legal. अगर परफॉर्मेंस में पर्सनल स्किल चाहिए और डेथ हो जाती है प्रोमिसर की तो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. लेकिन पर्सनल स्किल्स नहीं चाहिए
तो उसकी लीगल हेयर को पूरा करना। Subsequent illegality. At the time of making the contract was perfectly legal as per the law, but after the entering into the contract, some changes in the law arise. Due to that, it becomes illegal. The contract. जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस समय परफेक्टली लीगल था, उसके बाद कुछ समय बाद कुछ लॉ में चेंज आया और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वो लॉ चेंज होने की वजह से इलीगल हो गया, तो क्या माना जाएगा, सब्सिक्वेंट इलीगल। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर सब्सिक्वेंट टू द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त परफेक्टली सब कुछ सही था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दोनों कंट्रियों में जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो दूसरी कंट्री का, वॉर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दीज आर द 4 कंडीशन। इन दिस केस इट इज कॉल्ड द केस ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एंड ई पॉइंट था नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स। जो चीज मेन चाहिए हमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वही क्या हो जाती है, एग्जिस्टेंस से बाहर हो जाती है। व्हेन सर्टेन थिंग्स नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब वो है ही नहीं, they are not in existence. The contract becomes void on ground of impossible. X and Y contract to marry each other before the time fixed for marriage. X goes mad, the contract becomes void, right? But again, important topic, exception to the impossible. Yani ki these are the conditions where there is no matter of impossibility. Contract can be performed, and if you not perform, you will be you have to be compensated. You have to give the compensation, right? ये वो कंडीशंस है जहां पर जिनके ऊपर हम इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानी जाएगी, ये इम्पॉसिबिलिटी की डेफिनेशन में नहीं। आप इन कंडीशन की वजह से परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर कॉम्पनसेशन, आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी, राइट? So what are the cases? Please mark as important. Difficulty of possibility does not amount to impossibility. परफॉर्म करना पॉसिबल तो है, बहुत डिफिकल्ट है। आज बारिश बहुत तेज आ रही है, आज गर्मी बहुत है। These are not taken considered in case of impossible. Commercial impossibility does not render a contract void. अगर commercial impossibility है तो contract void नहीं माना जाएगा। So what is the commercial impossibility? You can say that sale on loss. Loss पे goods को बेचना ये commercial impossibility है, possibility नहीं। For example, suppose I am entered with a contract with Mr. X to supply 100 kg of rice at the rate of 50 rupees per kg on certain date. मैं X के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि उन्हें 100 किलो चावल बेचूंगा 50 रुपए किलो के हिसाब से सर्टेन डेट, राइट? What actually happened on the date where I have to supply or deliver, on the date where I have to supply or deliver the rice, the market price of rice becomes ₹60. जिस वक्त मुझे राइस को सप्लाई करना था उस वक्त राइस का प्राइस कितना हो गया, 50 से बढ़ के 60 रुपए हो गया। एंड डेफिनेटली if I deliver the rice on that date, I will be commercially, I will have to suffer the loss of ₹10 per kg. And definitely it is a commercial impossibility. But even in that case, I have to make the performance of the loss होने के बावजूद भी मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉसिबल तो है। लॉ केवल वहां साथ देता है जहां पर वो इम्पॉसिबिलिटी हो, परफॉर्म करना पॉसिबल ना हो। स्ट्राइक हो जाए, लॉकआउट हो जाए, सिविल डिस्टर्बेंस, झगड़े वगड़े हो जाए, उस केस में भी अगर आप परफॉर्म तो आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी। नॉन परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी डज नॉट एब्सॉल्व द प्रोमिसर फ्रॉम हिज लाइफ।
सर मैं क्यों नहीं परफॉर्म कर पाया? क्योंकि मेरे सप्लायर ने मुझे गुड सप्लाई नहीं किया। सर आई कुड नॉट सप्लाई द गुड्स as I have not received the supply from my supplier. I have to supply 100 kg of rice to Mr. X, which I will purchase from Y. Y will send this rice to me and I will give this rice to X. Y has not delivered the rice on time, so I am not able to perform this contract to the X. Whether I can save myself from the liabilities? Answer is no. मुझे X को चावल सप्लाई करना था 100 किलो का, जो Y से मैं लेके आऊंगा। Y ने सप्लाई नहीं किया मुझे टाइम पर, अब मेरे पास चावल ही नहीं है, मैं कैसे सप्लाई करूंगा? ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी, यानी मेरे ऊपर लायबिलिटी आएगी नॉन परफॉर्मेंस, यानी कि जो लॉस होगा X को इस नॉन सप्लाई ऑफ राइस से, मुझे इसका कॉम्पनसेशन देना। In this example, if X suffered some loss due to non-performance by me, I am liable to pay the compensation. Although I can claim this compensation from Y because Y has not made the supply on time and I have to bear the loss. But in respect of X, I have to make the compensation. मैं X को राइस सप्लाई नहीं कर पाया, इस वजह से X को नुकसान हुआ, तो मुझसे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। लेकिन वो कॉम्पनसेशन मैं Y से क्लेम कर सकता हूं क्योंकि Y ने सप्लाई नहीं किया मुझे, इस वजह से मुझे लॉस हुआ। वो लॉस मुझे कॉम्पनसेशन के रूप में देना पड़ा X को, वो क्लेम कर सकता। क्लियर इतनी बात? सर एक्सेप्शंस नहीं है, प्लीज आप रीड कर लीजिए, अगर नहीं है स्टडी मॉड्यूल में तब भी आप उनको रीड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। फिर विच टॉपिक यू वांट टू बी अंडरस्टैंड? प्लीज किस टॉपिक को समझना बताएं मुझे। तो हमने डिस्कस किया कि 5 केस हैं जहां पर इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। बट दीज आर द एक्सेप्शन, यानी कि इसे हम लॉ में इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानेंगे, इन सिचुएशंस को हम इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानेंगे, यानी कि इन सिचुएशंस की वजह से अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप लायबल होंगे नॉन परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट 4 ही चल रहा है मैडम। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन्स, लिख लीजिए, मार्क कीजिए, कंपल्सरीली। Sir, if the promiser did not make the delivery of good due to bad weather, so he is liable in this case also. Yes, bad weather है, अब बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तब तो खैर इम्पॉसिबिलिटी हो ही जाएगी। Actually, this will be depend upon the situation, severity of situation, right? सर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन बेटा ये डिस्कस करेंगे तो हम लास्ट में करेंगे आज की टॉपिक के बाद। ऑपरेशन ऑफ लॉ बाय डेथ ऑफ प्रोमिसर, कंपल्सरी, जहां पर्सनल स्किल चाहिए, वेयर पर्सनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड प्रोमिसर इज डेड, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, इट इज द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। By insolvency, you know insolvency means the situation where the debtor could not solve the liability, he is not able to pay the liability. Where an order of the discharge is passed by insolvency court, the insolvent extend discharge of liabilities of all debt incurred prior to his adjudication. मतलब क्या होगा बच्चों कि एक आदमी ने कहा सब मैं अपनी लायबिलिटी नहीं चुका पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत लायबिलिटी मेरे पास ज्यादा है, असेट्स मेरे पे कम है, उसने कोर्ट में
एक एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने कहा ओके ही इज इंसॉल्वेंट पर्सन. इफ कोर्ट orders that he is insolvent person, in that case he is not liable to pay any liability. वो कोई भी liability चुकाने के लिए liable नहीं है, right? By merger, we have already discussed this topic. By unauthorized alteration in terms of written document, आप written document में कुछ भी छेड़छाड़ कर देते हैं material items में, important items में, then contract will be end. कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. एग्रीमेंट में अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, तो चेंज करते हैं विद अनऑथराइज, मतलब जिसको ऑथराइज नहीं किया गया है प्रॉमिसी के द्वारा, द कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू. बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना. सर इंसॉल्वेंसी मींस बैंक्रप्सी, यस. Breach of contract, I have already discussed that there's two types, actual breach or anticipatory breach. Anticipatory breach when party repudiates, मतलब cancel, deny to perform, repudiates it before the time fixed for performance, it is called anticipatory breach. A contract to marry B, before the agreed date of marriage he marries C. B is entitled to sue A for breach of promise. In this case there is a anticipatory breach. So डेट से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़. Important thing once again, what are the consequences of anticipatory breach? What are the consequences of anticipatory breach? तो मार्क कर लीजिए बच्चों. Someone is saying, sir, can you continue this topic in the next class? Due to heavy rain, my net is not working. I am enjoying the live classes. Beta, you can read it from the recorded lectures. It is not possible for me to repeat this class once again. Okay. Sir, can example of operation law come under the impossibility? It may be possible कि वो example उसमें impossibility में आ जाए. But main topic is the contract in this situation is void. Right? Penalty shootout, just wait beta. The consequences of anticipatory breach. The promise may either resign the contract and treat the contract as an end and once sue for the damages, or he may elect not to resign but to treat the contract operative and wait for the time of performance and then hold the party liable for the consequences of for non-performance. प्लस एक बार पढ़ लीजिए बच्चों, फिर डिस्कस करते हैं इसको. अभी लेते हैं बेटा, प्रॉब्लम आपकी भी लेते हैं, सबकी लेते हैं. इस इन दो पॉइंट को समझने के लिए फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. Example number 37, then we will come again the previous slide. X agrees to sell to Y certain quantity of wheat at ₹100 per quintal to be delivered on 3rd. On 2nd February, X gives notice expressing his unwillingness to sell wheat, and the price of wheat on that date is ₹110 per quintal. If Y repudiates the title to do at his option, he would be able to recover damages compensation at ₹10 per quintal. Instead of taking the action forthwith, he keeps the contract alive till the 3rd March, and in the meantime, the price increases to 125 per quintal on that date. Y would be able to recover damages at the rate ₹25 per quintal. Please इसको एक बार read कीजिए यहीं तक. Need not to read the blue.
You just read the black. देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है इन विच एक्स विल सप्लाई द wheat to y at rate 100 rupees per quintal on 3rd March. 3 मार्च को एक्स वाई को 100 रुपए कुंटल की दर पर wheat बेचेगा. But before 3rd March, that is on 2nd February, X informed Y that he is not interested to sell the wheat on 3rd March. And on 2nd February, the rate of wheat was 110 per quintal. ठीक है, 2 फरवरी को ही उसने इन्फॉर्म कर दिया कि वो सप्लाई नहीं. Now in this case, Y has 2 options. First, he should take on 2nd February contract as end. वो ये मान ले कि 2 फरवरी को ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया and estimate the loss on that date. And the loss on that date was rupees 10 per quintal. भाई 100 रुपए में मिलना था, अब 110 में खरीदना पड़ेगा. The wheat was available at rupees 100 as per the contract, but now Y has to purchase at rupees 110. So loss is rupees 10 per quintal, and he can claim the compensation from X at the rate of 10 per. 100 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, अब उसे 110 में खरीदना पड़ेगा. 10 का लॉस हुआ वाई को, वाई 10 रुपए क्लेम कर सकता है, राइट, एज पर द लॉ. बट नाउ वाई हैज वन मोर ऑप्शन. ही कैन वेट टिल 3rd March टू फाइल द सूट. वो 3 मार्च तक वेट करे और 3 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट मान ले कि खत्म हुआ और 3 मार्च को सूट फाइल कर दे. If on 3rd March the price of the wheat is 125 per quintal, so the loss is rupees 25 per quintal to Y. Now Y can claim rupees 25. One question arises from your side. एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आता है कि सर अगर मान लीजिए उस दिन 3 मार्च को, 2 फरवरी को 110 रुपए प्राइस था, 3 मार्च को 108 रुपए प्राइस होता है, तो कॉम्पनसेशन कितना होगा? डेफिनेटली 8 रुपए. Some of you say, sir, if on the 3rd March the price is rupees 108, then what will be the amount of compensation? The amount of compensation is rupees 8 per quintal. Clear? Now what the point? The promisee may either resign the contract and treat the contract as at end at once sue for damage. यानी जिस दिन उसने इन्फॉर्म किया उस दिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान ले और उस दिन वो सूट फाइल कर. Or he may elect not to resign but to treat the contract operative. वो resign नहीं करे, माने चल रहा है, and wait for the time of performance and then hold the property liable for the consequence for non-performance. यानी जो ड्यू डेट थी उस दिन वो सूट. See the what was written in blue. If on the other hand, during the intervening period between 2nd February and 3rd March, private sale of wheat is prohibited by the government, the contract would become void and Y would not be able to recover any damages, any compensation. चलो मान लो 2 फरवरी के बाद और 3 फरवरी से पहले गवर्नमेंट ने ऑर्डर लाई, गवर्नमेंट, उसमें कहा भाई साहब व्हीट की कोई भी प्राइवेट सेल नहीं होगी, कोई आम आदमी नहीं बेच पाएगा, गवर्नमेंट ही बेचेगी.
अब उस वक्त तो बेचना इम्पॉसिबल हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, एंड हो जाएगा, अब वाई उससे कुछ भी क्लेम नहीं कर पाए। प्लीज रीड इट वंस अगेन। सोनल, आई हैव डिस्कस टेकिंग द प्राइस 108, मैंने आपको 108 रुपए लेके समझ आपकी बात डिस्कस कर लिया मैंने। रिजाइन मींस कैंसिलेशन, कैंसिल करना। पर्सनल इनकैपेसिटी लाइक डेंजरस मेलेडी, हियर मेलेडी मींस तो जस्ट लाइक कह सकते हैं इनकैपेबिलिटी कहेंगे यहाँ पर तो इसको। रेपुडिएट्स मींस कैंसिल करना, मना करना, डिनाई करना। But sir, why paid 100 rupees, but he get on rupees 10 as compensation? Rest 100 rupees is loss for her. अरे Manish is saying sir, 100 रुपए में तय हुआ था और 10 रुपए मिल रहे हैं। बेटा 100 रुपए दिए थोड़ी ना थे उसने, 100 में तय तो हुआ था कि वो 100 रुपए में माल खरीदेगा। अब वो 100 रुपए में माल खरीद बेचने की मना कर रहा है एक्स, तो वाई को 110 रुपए में खरीदना पड़ेगा। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी वजह से उसमें जो करना था, 100 रुपए में माल मिलता, अब उसे 110 में खरीदना पड़ेगा, 10 रुपए का लॉस हुआ, 10 रुपए कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा। अगर मान लीजिए सोनल कह रही है सर अगर 100 रुपए से 90 रुपए हो जाता है तो 90 तो वो कुछ भी कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं करता। क्लियर? तो एंटीसिपेटरी ब्रीच मींस breach of contract before the date of performance, and in this case promisee has two options. He considered the contract void at the time of repudiation by the promisor and filed the suit for the compensation, or he can continue the contract till the due date of performance, and on due date he considered the contract void and filed the suit for compensation. दो ही ऑप्शन है, या तो जिस दिन उसने मना किया उस दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मान ले और कॉम्पनसेशन के लिए सूट फाइल कर, या फिर उसे कंटिन्यू करे जिस दिन ड्यू डेट थी परफॉर्मेंस की उस दिन वो सूट फाइल करे। ठीक है? एक्चुअल ब्रीच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एट द टाइम of performance. Actual breach of contract, it may take place at the time when the performance is due or during the performance of contract. A agrees to deliver 100 bags of sugar to B on 1st February 2012. On the said day, he failed to supply 100 bags of sugar to B. This is called actual breach. This breach has been committed by A at the time when the performance becomes due. बहुत सिंपल सी बात है। By lapse of time, we have already discussed बेटे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइम बार्ड हो जाता है एज पर द लिमिटेशन एक्ट, यानी कि जो टाइम लिमिटेशन एक्ट में है, टाइम लिमिट है उसके उसमें परफॉर्म नहीं होता है तो वो क्या बन जाता है, टाइम बार्ड। A contract should be performed within a specified period as prescribed by the limitation act. If it is not performed and is not, if the not action is taken by the promisee within the specification period of the limitation, he is deprived of remedy at law. For example, if the creditor does not file a suit against the buyer for recovery of the price within 3 years, the debt becomes time barred and becomes irrecoverable. वो रिकवर नहीं किया जा सकता। सर वाई क्यों कॉम्पनसेशन लेगा एक्स से? वो तो एक्स के ऊपर ही है ना, वो वीट कितने में बेचे। बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि वो सप्लाई करेगा तो फिर तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और मैं पूरा ना करूं तो फिर तो लॉ की जरूरत ही नहीं है। फिर लॉ क्या रह गया? लॉ ये तो कहता है अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप सप्लाई उसे पूरा करिए। मैंने एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया वाई से कि वो 100 रुपए पर क्विंटल में गेहूं बेचेगा, वीट बेचेगा, और वो पूरा नहीं कर रहा है, वही तो लॉ है। तो लॉ क्या कहता है, भाई जो आपने प्रॉमिस किया पूरा करना पड़ेगा, आपने नहीं किया तो उसे कॉम्पनसेशन दो। ठीक है? Palak is asking if the price was 100 when contract was made and terms 110 on date of supply, then it would be a loss to X. Can X claim any compensation? No. X is performing as per the contract. वो तय कर चुके थे कि 100 में देगा, वो कॉम्पनसेशन कैसे क्लेम कर सकता है वो?
If the amount is 90, then what will be paid? Is 100 और 90. अगर प्राइस 90 हो जाए तो क्या देना पड़ेगा? 100 ही देना पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपीज का था. Deprived means ये लिखा ना, within the if it is not performed and not action taken by the promisee within the specified period of limitation, he is deprived of remedy at law. यानी उसे रेमेडी से नहीं, रेमेडी नहीं मिलेगी लॉ की अगर वो टाइम बाद हो गया. If the price is not mentioned in the contract, contract is void because of uncertainty. भूल गई आप. अगर प्राइस ही डिसाइड नहीं होगा तो वो सर्टेनिटी कैसे होगी? कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म. कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है? फर्स्ट, if the party mutually agrees to substitute the original contract by a new one or to resign or alter it. Actually ये जो टॉपिक है ये डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है. दिस टॉपिक कैन बी आस्क्ड एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम फॉर 5 to 6 मार्क्स. ठीक है, तो प्लीज लर्न दिस पॉइंट्स. First, if the parties mutually agree to substitute the original contract by a new one or to resign it or alter it. We have already discussed novation, rescission, alteration. If the promisee dispenses with or remits wholly or in part the performance of the promise made to or extend the time for such performance or accept any satisfaction for it. Promisee dispense with, मतलब कुछ और उपचार कर दिया गया. डिस्पेंस होती है ना, डिस्पेंस में कुछ और ऑप्शन दे दिया गया, या टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया परफॉर्मेंस के लिए, या कुछ और उसको दे दिया गया प्रोमिसी को जो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर उस जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं. इफ द पर्सन एट हुज ऑप्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable, रिमेंबर voidable, रिजाइंड इट, कैंसिल इट. जिस पर्सन को के पार्ट पर कॉन्ट्रैक्ट voidable था उसने उसे कैंसिल कर दिया, void डिक्लेयर कर दिया, भाई मैं परफॉर्म नहीं कर, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना. If the promisee neglects or refuses to afford the promisor reasonable facility for the performance of the promise. You want to perform, but promisee is not giving the proper facilities which required for performance, then promisor need not to perform. आप परफॉर्म करना चाहते हैं लेकिन प्रोमिसी आपको प्रॉपर सुविधा नहीं दे रहा है जिसको चाहिए परफॉर्म करने के लिए, तो फिर आपको भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, he is not opening the door. You want to supply the goods at time, but he is not opening the door. He is not providing the facility for delivery. Then you need not to perform. And last, when it is illegal. If the contract is illegal, then it need not to be performed. इसको पढ़ो बच्चों, याद करना है. Someone is saying, Mr. Tahira Hiba, सर अगर प्राइस चेंज नहीं होता है तो वो एक्स से पैसा लेगा. जो लॉस हुआ वाई को वही तो क्लेम करेगा. एक्स से 10 रुपए का लॉस हुआ, 10 रुपए क्लेम करेगा बच्चे. सर इफ द प्राइस इज 90 देन वाई हैव टू पे 90 ओनली. नो, if the price is 90 why have to pay according to the contract entered. जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, उसी के अकॉर्डिंग उसे पैसा देना है. सर इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मेरी तरफ से सभी चीज इंपॉर्टेंट है, पूरी लॉ की किताब इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए. तो चलिए, नाउ द टाइम फॉर पेनल्टी शूट आउट. एक बच्चे की क्वेरी थी स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. मैंने बताया था बेटे, कई बार बता चुका हूँ. स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में क्या होता है कि आप जो लीगल एक्टिविटीज हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हो, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन.
First question for penalty shootout 3. Change in some of the terms of the contract, recession, novation, alteration, merger क्या कहलाएगा? Second point. A contract containing the an undertaking to do an impossible act is void, voidable, valid, illegal. A holds a house on lease. After that, he buys the house and becomes the owner. The contract discharged by recession, merger, waiver, remission. Anshika Bete, you need not to send the answer one by one. Please send in all the answer in one way. One time भेज एक बार में भेजिए सारे आंसर बेटे. Next, Ram owes Sham rupees 10,000. Sham says that he will accept rupees 8,000 towards the final settlement. This is the voidable contract, valid contract, illegal और unenforceable. क्या कह रहा है वो कि भैया आपको 10,000 देने थे, मैं 8,000 ले लेता हूँ. The original contract need not be performed if there is recession, novation, alteration, all of the above. A voidable contract become void in case of recession, novation, alteration, merger. Last question. A agrees to deliver 10 TV sets to B on certain day at rupees 10,000 per set. On the said day, he failed to supply and price of TV on that day is rupees 12,000. Now B can claim from A 2,000, 20,000, 10,000, 5,000. चलिए क्वेरी और रह गई आपकी. सर अगर वाई मना कर दे कॉन्ट्रैक्ट से अपने पर्सनल रीजन की वजह से पर एक्स तैयार था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो क्या एक्स कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है? दिस इज द केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वाई के ऊपर एक्स के ऊपर दो ऑप्शन है, तो कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा या कैंसिल कर देगा, व्हाटएवर, दोनों भी कर सकता है. चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर्स को. चेंज इन सम टर्म्स, it is alteration. Next, contract containing an undertaking to do an impossible act, void. Next,
A holds a house on lease. After that, he buys the house and becomes the owner. The contract discharged by merger. Next. कितना क्लेम कर सकता है? क्या नहीं? Ram owes Shyam rupees 10,000. Shyam says that he will accept rupees 8,000 towards final settlement. This is a valid contract. All of these. A voidable contract becomes void in case of रेसेशन. कैंसिल कर देगा जब रेसेशन कर देगा. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जब कैंसिल किया जाएगा तभी वॉइड होगा. कितना क्लेम कर सकता है? 2,000 पर टीवी सेट फॉर 10 सेट्स यानी 20,000. So who is the lucky one? First is